back, students. Standard 9th Maths, Chapter 2 Polynomials, and we are into the 11th session of this chapter. Alright, let's see. We move on to the next topic, and that is expansion of polynomials. What does expansion of polynomial mean? Uska matlab kya hai? Just try to understand, children. Here is one integer, 4. There is another integer, 7. So we have two numbers, two integers. Now if I put multiplication sign, what are we doing? Yes, multiplication of two numbers. Now for that you should know the tables. 4 sevens are 28. Another number 11 and negative number minus 9. So these are two integers. What process you are going to do on the two numbers? Multiplication. 11 nines are 99 and different sign. So product is minus. So this is multiplication of two numbers, or even more. Zyada bhi ho sakte hai. Like children, 3 multiplied by 5 multiplied by minus 2. So we have three numbers. But you know, tables allow you to multiply only two numbers. So I'll select. I can select any two. I've selected first two. What is 3 5s are 15? Same sign. So product is 15 into minus 2. So again I got two numbers. So now 15 2s are 30 and different sign. So minus. So that is how you multiply two or more than two numbers. So this is multiplication of numbers. Multiplication of numbers. But children, if you have a polynomial, suppose there is one polynomial p of x and another polynomial q of x. Alright? And if I multiply the two polynomials, this is called multiplication of two polynomials. Multiplication of two polynomials. But children, mathematically, instead of saying multiplication, we say expansion. So expansion of two polynomials. Alright children. So when you have to find, or when you perform process of multiplication of two numbers, you use the table. So multiplication of two numbers, you need table like that. Multiplication of two polynomials, or you can say expansion of polynomials, require identities. Did you understand, children? Okay. So what does expansion of polynomial means? So you can say the process of multiplication of two or more polynomials is called expansion. Is called expansion of polynomials. So I hope it is clear to you. Children, you have done this expansion, most of the expansion starting from standard 7th, 8th, and now you are in 9th. But maybe you have forgotten, and to strengthen your expansion of polynomials, I am going to start with the basics. So you don't worry if you have forgotten, okay, or if you are weak in expansion of polynomials. Alright, now the question is, to multiply two numbers or more numbers, you need table. To multiply or expand two or more polynomials, you need identities. Now how many identities? Okay, if you talk about tables, 1 ones are, 2 ones are, 3 ones are, 4 ones are, 5 ones are, 6 ones are, 7 ones are, 8 ones are, 9 ones are. कम से कम इतने tables तो आने ही चाहिए. Correct? So like that, if you want to multiply two or more polynomials, that means if you want to expand two or more polynomials, you need to learn the 6 identities, which are called expansion identities. The first one is monomial into monomial. Matlab, first polynomial be monomial, second polynomial be monomial, and we have to multiply them. That means we have to expand.
The second one is monomial into binomial. Matlab, the first polynomial is having only one term and the second polynomial is having two terms. Binomial. Children, you have learned that. लेकिन उसमें 4 different types है. Type A, type B, type C, type D. We are going to see each one by one. So I'm not discussing much right now. So this is second type of identity. Second identity, monomial into binomial. The third one, cube of binomial. Fourth one, square of trinomial. Fifth one, binomial into trinomial. And sixth one, trinomial into hexanomial. So if you learn the 6 trigonometric identities, yes, the expansion of polynomial is going to be very easy, children. So now let's see monomial into monomial and then monomial into binomial, all 4 types. First we shall see monomial into monomial. Alright? Chaliye. Pehla polynomial, let's say P of X. वो monomial है. So I'm going to call it as A. Dusra polynomial Q of X. I'm going to call it as B. So I want to multiply P of X multiplied by Q of X. What is P of X? A. What is Q of X? B. So what is the multiplication? A into B. This is the easiest expansion of 2 polynomials. चलिए एक अभी P1 बोलता हूं. The first polynomial is 2x. The second polynomial P2 is 3x. आपको दोनों का multiplication करना है. This is a polynomial with one term. This is also a polynomial with one term. Yes. So what is the multiplication? 2 into 3. 6. The product of coefficient is 6. X into x. That is x square. Alright, children. Did you understand? Chaliye. Another example, P of 1, P of 2. Polynomial 1 is x. Polynomial 2 is 3y. Let me say this is minus 2x. आपको दोनों को multiply करना है. First you multiply the coefficients. 2 3s are 6. Different sign. So minus x into y will be xy. So this is how you multiply 2 monomials. Alright. P of A into P of B is equal to x into y. If you say P of A is x and P of B is y. Alright. First polynomial is x. The other polynomial is y. Then you can say x into y. First polynomial is P. The second polynomial is Q. Then what is the expansion of this 2 polynomial? P into Q. First polynomial is M. The second polynomial is N. Because they are single term, monomial. Their product will be M into N. And that is how we write. I hope you have understood. Okay. Chalo. Moving on to the next one. Now this is monomial into binomial. Monomial into binomial. Children, I have made a mistake. Yes, there will be 7. Here, monomial into binomial. ये जो है वो थर्ड में जाएगा. That is binomial into trinomial. Binomial into trinomial में जाएगा. Alright? ये monomial into binomial भी easy है. Say suppose monomial into binomial. Monomial क्या है? X. Binomial क्या है? A plus B. तो आप distribute करते हो. The expansion is x into A, ax. Different same signs plus. X into B, bx. And same sign, so plus. So this is the expansion of monomial and binomial. If monomial is P and binomial is Q plus R, so what will be the expansion? P into Q, PQ, same sign plus. P into R, PR, same sign plus. So PQ plus PR is product of monomial P and binomial Q plus R. Are you getting me, children? Yes, children, I have missed one here. Let me write it. Okay. The second type is monomial into binomial. And the third type is binomial into binomial, children. Binomial into binomial. So this will be fourth,
this will be fifth, this will be sixth and seventh. So you have to learn 7 identities. 7 identities. Okay. The first one we finished. That is monomial into binomial. Second one we finished. Now we are going to see the third one, which is binomial into binomial children. क्या कर रहा हूं मैं? Binomial into binomial. Alright. Now let us see. Type A. Children, मुझे binomial चाहिए. I want binomial. So ये polynomial 2 terms वाला binomial. ये polynomial भी 2 terms वाला. And multiplication. यदि ब्रैकेट हो तो मल्टीप्लीकेशन की साइन रखो या ना रखो. इट मीन्स ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट. मैंने अभी रखा है. नेक्स्ट टाइम आई वोंट कीप दैट. चलो टाइप ए. टाइप ए में क्या है? इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड बाइनोमियल का फर्स्ट बाइनोमियल का सेकंड टर्म होगा, सेकंड बाइनोमियल का सेकंड टर्म होगा. सो ये फर्स्ट टर्म और यहां सेकंड टर्म, all the terms are different. So I'll put a plus b, that is first binomial, c plus d, that is second binomial. Children, so this is binomial into binomial type A, where if you look at the first term a और यहां देखो तो c, they are different. If you look at the second term, it is plus b और यहां plus d, they are different. So first term and second term are different. Children, what can I do? I'm going to call this binomial as m. उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या है? c plus d. Alright children. Now where this m, you have introduced m. m is equal to a plus b. a plus b के जगह पे आपने m रख दिया. Now this is monomial into binomial. So आप डिस्ट्रीब्यूट करो children. So this is m into c. You can write it as c into m. Same sign. Plus. Then plus. m into d. You can write it as d into m. Correct? Okay. This is equal to c into m. Write the value of m, a plus b again. So this is a plus b. Okay. Okay. Or this plus d into, again, the m is a plus b. Did you understand? So this is the expansion of this. Now look here. P plus, oh you just observe. आपने फर्स्ट बाइनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट किया. पूरा बाइनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट किया. c इंटू ए प्लस बी, मिला के नहीं, प्लस d इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू डी. सो यदि ये फर्स्ट बाइनोमियल है, r प्लस x सेकंड बाइनोमियल है, फर्स्ट टर्म p, फर्स्ट टर्म r डिफरेंट, सेकंड टर्म q, सेकंड टर्म s डिफरेंट. आपको ये पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो यू कैन राइट r इंटू p प्लस q और प्लस यू कैन राइट s इंटू p प्लस q. Children, let me tell you, there is other way as well. p plus q into r plus s. आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो ये सेकंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो r plus s into p, you may write p first into r plus s, then you will distribute with q. So plus q into r plus s. So this is the identity, children. Binomial into binomial type A, where first term and second term are different. Okay. Now let's move to type B. First terms are same, second terms are opposite. Children, binomial देखो, a plus b. दूसरा binomial देखो, first terms are same. So यहाँ first term a है तो यहाँ भी first term है. Second terms are opposite. यहाँ plus b है, so यहाँ minus b है. Alright, चलिए अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. a first term into a minus b, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया. फिर ये प्लस b इन a into a, b into a minus b. So that is equal to a into a square, a into b, ab, different signs, minus b into a b, same sign, plus b into b square, different signs, minus
minus AB plus AB gone. So that is A square minus B square. Got it, children? So A plus B into A minus B is equal to A square minus B square. ये आपकी आइडेंटिटी बन गई. All right? Okay, children? चलिए. Now same one. A plus B into A minus B. चलो, आपने सेकंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूट किया था. अब मैं फर्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूट करूं तो a प्लस बी इंटू ए. सो a पहले इंटू ए प्लस बी. फिर ये टर्म है a प्लस बी इंटू बी, बट आगे माइनस साइन है, सो आई राइट माइनस और b इंटू ए प्लस बी. चलिए, दिस इज मोनोमियल इंटू बाइनोमियल. a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी विथ प्लस साइन, b इंटू ए बी different sign, so minus b into b square, different sign, so minus, plus ab minus ab, that is equal to a square minus b square. Same answer आया कि नहीं? So a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. One more thing you see, यहाँ a plus b पहली ब्रैकेट है, a minus b पहली ब्रैकेट हो सकती है, और सेकंड ब्रैकेट a plus b. तो दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड. फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है. यस, सेकंड टर्म्स ऑपोजिट. यहां माइनस बी प्लस बी तो ऑपोजिट है. तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर. इज दैट क्लियर टू यू? सो वी हैव सीन 3 expansion identities: monomial into monomial, monomial into binomial, and binomial into binomial. 2 types, type A and type B. Okay, so let's move on to the next one, and that is, it will continue. Binomial into binomial, type B के बाद आएगी type C. Correct? It will be type C. First terms and second terms are same. Oh children, let me take the binomial A plus B. Children, second binomial, first term same A, second term also same, so plus B. Oh children, चलो हम वही करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो ओके, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फर्स्ट टर्म इज a इंटू ए प्लस बी, सेकंड टर्म इज प्लस b इंटू ए प्लस बी. आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? ओके, फिर नॉर्मल एक्सपांशन a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी प्लस साइन, b इंटू ए बी प्लस साइन, b इंटू बी स्क्वायर प्लस साइन. दिस आर लाइक टर्म्स. इस बार माइनस नहीं है, सो ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी 2ab और ए प्लस बी. आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, सेकंड और थर्ड टर्म सिंप्लीफाई होकर एक बन गया. सो दिस एक्सपांशन इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आप उसको ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं. दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ऑलराइट, श्योर? ओके, चलिए. Now, first binomial is a minus b. The second binomial is also a minus b. So look, first term a same, second term minus b same. Okay, so let's do a, this first term a into the second binomial a minus b. Second term minus b into a minus b. So that is equal to a into a square, a into b, ab with minus sign, b into a b with minus sign, okay, b into b square with plus sign. So that is equal to a square minus ab minus 2 times ab plus b square. So आपको क्या आइडेंटिटी मिला चिल्ड्रन? दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ये माइनस है, सो माइनस 2 टाइम्स ए बी, ये जो है, और प्लस बी स्क्वायर. यस, इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. या ओके, सो चिल्ड्रन प्लीज टेक केयर. देखो मैं क्या कर रहा हूं. a प्लस बी इंटू ए प्लस बी is a plus b whole square, like x into x, you can say x square, m into m, you can say m square. तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट सेम है, सो a plus b whole square is equal to, उसका एक्सपांशन ये है, a square plus b square. यदि ये प्लस हुआ तो ये प्लस 2ab, या आपको ये याद रखना है तो ये भी याद रख सकता है. If this is plus, the middle term is plus.
इज दैट क्लियर? ओके, अब इसकी बारी. a minus b into a minus b is a minus b whole square, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर, और उसका एक्सपांशन फर्स्ट टर्म स्क्वायर ये प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर. नो मैटर, मिडल टर्म इज माइनस, या बीच में माइनस है, फिर भी स्क्वायर्स वाली टर्म प्लस. यस, नाउ दिस इज माइनस, यहां माइनस हो, माइनस 2 टाइम्स ए बी. आपको यहां याद करना हो, मिडल में लिखना हो तो वो माइनस. ऑलराइट, सो दीज आर द टू आइडेंटिटीज ऑफ टाइप सी. ओके, सो इसमें प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, सो प्लीज टेक केयर. नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप डी. उसमें फर्स्ट टर्म्स आर सेम बट सेकंड टर्म्स आर डिफरेंट. ऑलराइट, तो देखते हैं. ए प्लस बी, अब फर्स्ट टर्म तो ये ही, लेकिन सेकंड टर्म इज सी. सी दैट? ओके, लेट्स एक्सपांड हमारा नॉर्मल डिवीजन से. फर्स्ट टर्म a इंटू ए प्लस सी, द सेकंड टर्म प्लस b इंटू ए प्लस सी, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू सी ए सी, b इंटू ए बी प्लस b इंटू सी. ये आपको समझ में आ रहा है ना, b इंटू सी बी सी. चिल्ड्रन, ये मिडल टर्म में कुछ कॉमन है. a इज कॉमन, सो आई विल टेक दैट a कॉमन. फर्स्ट टर्म a स्क्वायर प्लस a बाहर निकाला और c प्लस बी सी, सो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, ये मोनोमियल पीछे लिखता हूं और बाइनोमियल पहले, c प्लस बी. ऑलराइट, या यू मे राइट b प्लस सी प्लस बी सी, सो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर. Oh children, I forgot this a to write here. So a square plus c plus b लिखो या b plus c, it's one and the same, into a plus bc. So look here children, what is the identity? यहां जो फर्स्ट टर्म सेम है उसका स्क्वायर, सो पहले स्क्वायर लिखो, प्लस सम ऑफ सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म है उसका सम लिखो b प्लस सी, फिर इनटू द फर्स्ट टर्म जो a है प्लस b इंटू सी, तो प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म है उसका प्रोडक्ट. सो दिस इज द आइडेंटिटी चिल्ड्रन, दिस इज द आइडेंटिटी. देखो अभी p प्लस क्यू इंटू p प्लस m. से चिल्ड्रन, फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, इट इज डिफरेंट. सो व्हाट इज द एक्सपांशन आइडेंटिटी? जो फर्स्ट टर्म सेम है उसका p स्क्वायर प्लस जो सेकंड टर्म्स है q और m उसका एडिशन प्लस q प्लस m इनटू फर्स्ट टर्म विच इज p प्लस प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड टर्म q इंटू m. आपकी समझ में आया चिल्ड्रन? लेट्स टेक वन मोर. x प्लस y इंटू x प्लस z. ओ चिल्ड्रन, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म डिफरेंट. व्हाट इज द एक्सपांशन आइडेंटिटी? ऐसे आप लंबा एक्सपांशन नहीं करना है, आपको ये एक्सपांशन आइडेंटिटी याद रखना है. फर्स्ट टर्म सेम है सो दैट इज एक्स स्क्वायर, सेकंड टर्म डिफरेंट है तो यू टेक सम ऑफ दो सेकंड टर्म्स y प्लस z इनटू फर्स्ट टर्म विच इज x प्लस नाउ यू टेक प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म्स, सेकंड टर्म y और z है सो y इंटू z. सो दिस इज द एक्सपांशन आइडेंटिटी फॉर टाइप D. I hope that is clear to you. All right. So moving ahead with the fifth type now. Okay. Right. It's not fifth but the fourth one, and that is cube of a binomial. All right. I'm going to take a binomial whole square a plus b, and we have binomial in other form as well. A minus b भी binomial आता है, a minus b. Children, cube बोला है, so I'll have to take cube, not square, cube. Now you see what will be the expansion identity. Here, children, what is x cube? X into x into x, correct? Like that, a plus b whole cube, a plus b into a plus b into a plus b, correct? That is equal to, आप इसका एक्सपांड पहले कर लीजिए, a plus b into. चिल्ड्रन, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, याद करो वो आइडेंटिटी हमने जो देखी, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो एक्सपांशन मैंने लिखा. नाउ नो वे, यू हैव टू एक्सपांड लाइक दिस, a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, a इंटू 2ab 2a स्क्वायर b,
with plus sign. A into B square, AB square with plus sign. Now B into A square, B into A square B with plus sign. B into 2AB, 2AB square, same sign plus. B into B square, B cube. Alright children, so see what I am doing. ये क्यूब वाली टर्म पहले लिख देता हूं. A क्यूब प्लस B क्यूब. Alright, okay. और यहां कुछ लाइक टर्म्स है चिल्ड्रन. A square B, 2A square B plus 1A square B is 3A square B. और AB square और AB square, 1AB square plus 2AB square is 3AB square. Correct children? So that is equal to A cube plus B cube. Children, ये दो टर्म में कुछ कॉमन है. एक तो 3 कॉमन है, फिर A कॉमन है और B कॉमन है. So 3AB is common. Correct? So ब्रैकेट में 3 कॉमन में चला गया. A स्क्वायर है, 1A is in common, so 1A is left. और B कॉमन में गया है, साइन विल रिमेन प्लस. 3 कॉमन में गया है, A कॉमन में गया है, B स्क्वायर, 2B में से कॉमन, so 1 is left. So this is the expansion identity children. A plus B whole cube is equal to A cube plus B cube plus 3 times AB into A plus B. ये आपकी आइडेंटिटी है चिल्ड्रन. चलिए अब इसकी बारी. जिस तरह मैंने यहां एक्सपांड किया उसी तरह आपको यहां एक्सपांड करना है. A माइनस बी इंटू A माइनस बी इंटू A माइनस बी. आपको पता है कोई भी दो पोलिनोमियल का ही एक्सपांशन एट अ टाइम हो सकता है. सो A माइनस बी, इसका एक्सपांशन भाई फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म ऑल्सो सेम. सो दिस इज A माइनस बी होल स्क्वायर. उसका एक्सपांशन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, या यू कैन से A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर. मैं ये लिख रहा हूं A square minus 2AB plus B square. Now this A cube minus 2A square B plus AB square minus A square B plus 2AB square और ये minus B cube. So that is equal to A cube और minus B cube मैंने पहले लिखा. A square B दोनों विथ माइनस साइन. सो टोटल ऐड करो 3A square B और माइनस AB square बोथ आर पॉजिटिव टर्म्स. टोटल करो 1 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स AB square, लेकिन दोनों प्लस है सो प्लस. अच्छा, फर्स्ट 2 टर्म्स A क्यूब माइनस B क्यूब, यहां से माइनस 3 कॉमन, A कॉमन B, ब्रैकेट. चिल्ड्रन माइनस कॉमन, सो यू हैव टू चेंज द साइन. यहां से एक A बचने वाला है, साइन विल चेंज, वो माइनस बन जाएगा, और यहां से B बचने वाला है. ऑलराइट, सो दिस इज योर एक्सपांशन आइडेंटिटी फॉर A माइनस B होल क्यूब. ऑलराइट, सो लेट्स हैव लिटिल प्रैक्टिस. X minus Y whole cube. What will be the identity? X cube minus Y cube minus 3 times XY into X minus Y. Correct? Yes. M plus N whole cube. What is the expansion identity? M cube plus N cube plus 3 times M into N into M plus N. ये सारी identities है. Is that clear to you? Yes. Now moving on to the fifth one, and that is square of trinomial. Children, it's square of trinomial. Okay? So let's see. Children, ये trinomial है. So A plus B plus C, ये ट्राइनोमियल बन गया. उसका मुझे चाहिए स्क्वायर. चलिए, how will you expand this? This is equal to by x square. आप कैसे लिखोगे? x into x, ब्रैकेट स्क्वायर. सो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट A plus B plus C, A plus B plus C. नाउ बहुत लंबा होने वाला है. A into A स्क्वायर, A into B AB, A into C AC plus plus. Now start with B. B into A AB, B into B B square, B into C BC, sub plus C into A CA,
C into B, BC, or C into C, C square, plus. Children, A square, B square, C square. A square plus B square plus C square. Correct? Then you have AB plus AB, दो बार. AB plus AB, 2AB. Correct? फिर आपके पास BC plus BC, that is 2BC. And then finally you have CA, AC plus CA. CA बोल दो, so plus 2CA. Therefore, A plus B plus C whole square is A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2AB plus 2BC plus 2CA. AB, BC or CA. Okay, so let's see one more identity. X plus Y plus Z whole square. Square of trinomial. According to identity, what you can write? First term square x square plus second term square y square plus third term square z square plus 2 into xy plus 2 into yz plus 2 into zx. So this is the expansion identity. I hope children that is clear to you. Okay. Now we are going to see next identity, and it is binomial into trinomial. Alright, बाइनोमियल दो प्रकार के होते हैं, A प्लस बी, और ये ट्राइनोमियल स्पेशल वन है. ये ट्राइनोमियल जो मैं बता रहा हूं वैसा ही होना चाहिए, वो स्पेसिफिक है. यहां फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर ए है तो उसका स्क्वायर, यहां लास्ट टर्म बी तो बी स्क्वायर, मिडल में यहां प्लस तो यहां माइनस, और दोनों का प्रोडक्ट ए बी और ये प्लस. सो इफ बाइनोमियल इज ऑफ दिस फॉर्म and trinomial is of this form, तो expansion क्या होगा? Distribute करो, a into a square a cube, a into ab a square b with different sign so minus, a into b square ab square with same sign plus, b into a square b with same sign plus, b into ab square with different signs minus, b into b square b cube same sign plus. Children, इस बार क्या हुआ? A square b, they are like terms, but minus and plus, so they cancel. ab square, they are like terms, but they are opposite also. Plus ab square minus ab square. So you got a cube plus b cube, children. So इसकी identity क्या हुई? A cube plus b cube. So ऐसा binomial with this specific trinomial, then binomial into trinomial is a cube plus b cube. बाइनोमियल में एक और ऑप्शन होता है, यहाँ बाइनोमियल ए प्लस बी था तो यहाँ ए माइनस बी भी हो सकता है. तो एक स्पेशल ट्राइनोमियल होना चाहिए, और वो कौन सा? फर्स्ट टर्म ए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर विद प्लस साइन, सेकंड टर्म बी तो प्लस बी स्क्वायर, और मिडल में माइनस तो प्लस, ये दो का प्रोडक्ट. ये बाइनोमियल ऐसा ही होना चाहिए. चलिए एक्सपांड करो. ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, a into ab a square b with plus sign, a into b square ab square with plus sign, b into a square b with minus sign, b into ab square with minus sign, b into b square b cube with minus sign, plus a square b minus a square b plus ab square minus ab square. So you are left with a cube minus b cube. Oh children, so binomial into trinomial of this form will give you expansion a cube minus b cube. So this is the other identity. Is that clear to you, children? Now this one, I don't know whether you have learnt or not. You will not have in your textbook. But let's see. Trinomial. Trinomial एक ही फॉर्म का होता है और वो है a plus b plus c. ये स्पेशल हेक्सानोमियल चाहिए हमें. जैसे यहाँ ट्राइनोमियल स्पेशल था वैसे यहाँ भी स्पेशल चाहिए. So hexanomial means polynomial having 6 terms. First 3 terms ये तीनों term का squares, a square plus b square plus c square. Then a into b with minus sign. Then b into c with minus sign. Then c into a with minus sign. बन गया ना hexanomial. Now let's see what is the expansion. This is equal to a into a square a cube, a into b square ab square, a into c square ac square. सब प्लस है. b into a square b plus b into b square
b cube plus b into c square, bc square or plus. Now this. Oh children, I made mistake. हमने a into a square, a into b square, a into c square वही मल्टीप्लाई किया. Now a into ab minus a square b, a into bc, abc with minus sign, a into ca minus ca square. उसी तरह ये b into 3 terms किया. Now b into ab square with minus sign, b into bc, b square c with minus sign, b into ca, that is abc with minus sign. Now this c into a square ca square with plus sign, c into b square c with plus sign, c into c square c cube with plus sign, c into abc with minus sign, c into bc square with minus sign, c into c square a with minus sign. देख लीजिए अब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए और सी स्क्वायर ए, ये प्लस ये माइनस, माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, माइनस सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, plus b square c minus b square c. So you are left with a cube plus b cube plus c cube और जो तीन टर्म बची है that is minus abc minus abc minus abc. So minus x minus x minus x. So you can say minus 3x. So minus abc minus abc minus abc is minus 3abc. So children, ट्राइनोमियल इंटू हेक्सानोमियल इस प्रकार का होगा तो उसका एक्सपांशन ये तीनों का परफेक्ट क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्यूब है तो माइनस 3 टाइम्स ए बी इंटू सी. सो दिस इज द लास्ट आइडेंटिटी. चिल्ड्रन, लेट्स सी ऑल द आइडेंटिटीज दैट वी हैव डिराइव्ड. अभी जो हमने आइडेंटिटीज डिराइव किया है सबको लिखेंगे. राइट? मोनोमियल इंटू मोनोमियल. सपोज वन मोनोमियल इज x, द अदर मोनोमियल इज y, then its expansion is xy. That's it. Now monomial into binomial. यहां लिखता हूं monomial is x. Children, I would like to express everything in a and b. First monomial is a, the second is b, so the product is ab. The monomial is a and the binomial is b plus c. ये monomial और binomial. So what is the expansion? ab plus ac. This is monomial into binomial. Chalo. Now we move on to binomial into binomial type A. Okay? That is a plus b into c plus d. Alright? All four terms are different. Then what is the expansion identity? आप ये पहले term a ले लो into c plus d. Then you take second term plus b into c plus d. So ये रही identity. चलिए. Next. First term आते same and second term opposite. a plus b into a minus b. First term same, second term opposite. The expansion identity क्या है? a square minus b square. Shortcut. Okay. Now third. Yeah, first term भी same, second term भी same. मतलब square of binomial. So a plus b whole square into a plus b whole square. So a square, middle term plus 2ab plus b square. Children, यहाँ एक और है. बाइनोमियल में दूसरा फॉर्म भी है, a माइनस बी होल स्क्वायर. सो दैट इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर, होल स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा, माइनस सो मिडल टर्म माइनस 2 टाइम्स ए बी और प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव ही होगी. सो दीज आर द टू आइडेंटिटीज. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, a plus b into a plus c. First term same, but the second terms are different. So that is equal to first term का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का एडिशन b प्लस सी इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज a. यहां स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाता है, यहां a प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स b इंटू सी. ये रही आपकी आइडेंटिटी फॉर टाइप डी. ऑलराइट, नाउ क्यूब ऑफ बाइनोमियल. चिल्ड्रन, क्यूब ऑफ बाइनोमियल a plus b plus c whole cube. Oh children, whole cube
So cube of A plus cube of B plus cube of C, correct, और minus 3ABC. हमने देखा कैसे आया, right? Now square of trinomial, sorry, cube of binomial चाहिए, I'm sorry, ये तो trinomial का क्यूब ले लिया. A plus B whole cube, cube of binomial, तो इसका क्यूब आएगा ही, A cube plus B cube plus 3 times A into B into A plus B. Alright, अब बाइनोमियल की बात है तो दो आएंगे, A minus B whole cube, cube of binomial, so A cube minus B cube minus 3AB into A minus B. प्लस में सभी प्लस आते हैं, माइनस में सभी माइनस आते हैं. ऑलराइट, नाउ वी हैव स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल है A प्लस B प्लस C और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो सभी टर्म का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, स्क्वायर में 2 टाइम्स AB प्लस 2 टाइम्स BC plus 2 times CA. Is that clear to you? So this is the identity. Now binomial into trinomial. Binomial A plus B. Trinomial specific चाहिए. A square minus AB plus B square. Then what is the expansion? By A cube plus B cube. Plus होगा तो A cube plus B cube. That's it. अभी ये binomial involved है, so इसमें दो आएंगे. A minus B binomial. तो हमें ट्राइनोमियल चाहिए ए स्क्वायर, यहां माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और उसका एक्सपांशन क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. एंड द लास्ट वन, ट्राइनोमियल इंटू हेक्सानोमियल. ट्राइनोमियल एक ही फॉर्म का आता है, ए प्लस बी प्लस सी. हेक्सानोमियल स्पेशल वन चाहिए, ये सारे टर्म्स के परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. देन माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी minus C into A, that is equal to, what is the expansion? इसका expansion A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. So children, ये 7 expansion identities you will have to learn. So in the next session we will see how we can expand polynomials using the expansion identities. Till then, goodbye.